हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आज हम सेक्शन डी जो है वो लास्ट का जो सेक्शन है बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स वाला उसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो ये सेक्शन ए और बी जो है ये सब हमारा डन हो चुका है। इवन सेक्शन सी ऑल्सो वी हैव डन। एंड आज जो है वो सेक्शन डी करेंगे हम। ये लिटरेचर वाला ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पे। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो पहला है, व्हाट वर द स्किल्स डेवलप्ड बाय संतोष टू बिकम अ गुड माउंटेनियर। और दो क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ और उसके आंसर बताऊंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन है, फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, एक्सप्लेन व्हाई डज द पोएट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वॉर एज विंटर। तो इन दोनों के पहले हम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो रीड कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, इसका आंसर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर है, संतोष वेंट on an expedition every year and improved her skills gradually. She developed immunity to cold weather and heights. Santosh had the qualities of physical strength, mental strength, and strong willpower. In 1992, 4 years after her first casual climb on the Aravalli Hills, she climbed Mount Everest. तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, the phrase fed by peaceful harvest by war's long winter starved is a metaphor that compares the sustenance provided by the harvest to the hunger caused by war. The poet is calling harvest peaceful because they are a result of peace and stability, where crops can be grown and harvested without interference from conflict. On the other hand, war is described as a long winter, representing the cold and harsh conditions that lead to starvation and suffering. This metaphor highlights the destructive nature of war and contrasts it with the nourishing and sustaining power of peace. So ये सेकेंड पार्ट का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ मैं। व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल फुल ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, एक्सप्लेन। तो ये काठमांडू चैप्टर से है आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं पढ़ लेती हूँ। व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द पोएट एज मेंशन इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हम एक साथ ही इसके आंसर्स जो हैं वो देख लेते हैं। मैं रीड करती हूँ इसके आंसर्स। सो बेटे ये थर्ड पार्ट का आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही। काठमांडू बाय विक्रम सेठ, वेयर इन ही राइट्स अबाउट द टाइम ही स्पेंट इन नेपाल विजिटिंग 2 temples, द बुद्धनाथ स्तूपा एंड द पशुपतिनाथ, द shrines most sacrosanct to Buddhist and Hindus respectively. He describes the atmosphere inside these temples and recounts his observation about their environments and contrast the serenity in the Buddhist stupa with the frenetic activity in the Hindu temple. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है वो हम रीड करेंगे। The poet's soul had gone into a deep sleep and he did not realize what was happening. He never thought that one day death would take his Lucy away from him. He had no fears and he could not feel anything. He had taken life for granted. The poet finally accepts the truth that Lucy is dead and she will never come back. She is motionless and lifeless. She cannot see or hear anything anymore and she has been buried in the earth. आगे, she is rotating along with the earth. One day she will become a part of the rocks, stones and trees that are a part of the earth. अब लास्ट 5th पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर। अब पढ़ेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड जेरेड कन्विंस द इंट्रूडर दैट हिज प्लान वुड फेल, एक्सप्लेन। इफ आई वर यू वाले चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर, चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। सो बेटा ये है 5th पार्ट का आंसर। He claims to be a murderer, and since he was called the mystery man, he convinced him by saying that he wouldn't get anything by stealing his identity. Telling this story, he convinced the intruder for not killing him. आगे इसी में ये है, Jared advised him not to be a fool and to look for himself. Jared opened the door and stopped away. The intruder leaned forward to inspect it with his eyesight towards Jared, but with his revolver ready. As turned his head, Jared gave him a push and trapped him in the cupboard. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। फर्स्ट है, वाई डिड द राइटर फील ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, एक्सप्लेन। यानी वाई डिड द राइटर फील ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर 5 ऑफ स्कूल, अच्छा हाई स्कूल। और ये पोएम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, जो है इसमें चैप्टर में ये आपके बताना है। तो चलिए ये इसका आंसर भी हम एक साथ लिखेंगे और इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा ये 7th क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। द ऑथर फेल्ट ऑकवर्ड बिकॉज द स्कूल एनवायरनमेंट वॉज न्यू टू हिम। इसी के आगे लिखो, इन द स्टोरी अ हाउस इज़ नॉट अ होम द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिज चाइल्डहुड डेज एंड हिज डेज इन द स्कूल। एज द ऑथर टुक एडमिशन टू द न्यू हाई स्कूल, हिज लाइफ टुक अ चांस। In the initial days of his new high school, he felt deserted, isolated, and awkward. He was in remorse because he badly missed his old friends and school. The unfamiliar new environment of the present school made him uncomfortable and he struggled to cope with it. चलिए अब next question read करते हैं। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 में ही सेकेंड और थर्ड पार्ट में एक बार रीड कर रही हूँ और इन दोनों के आंसर्स हम देख लेंगे। डिड लश्कॉफ बिकम अ बैगर बाय सर्कमस्टांस और बाय चॉइस? व्हाट रीजंस डज ही गिव सर्गी फॉर लाइंग? ठीक है, तो द बैगर जो है वो आपका चैप्टर है, इसका ये क्वेश्चन हो गया। वाई डिड द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस ऑफ हैप्पी प्रिंस? वॉज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम एक बार ही पढ़ लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इसी में ही बेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये सेकंड पार्ट का आंसर है हमारा 7th क्वेश्चन का। लश्कॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टांसेस। ही यूज्ड टू सिंग इन अ रशियन choir बट ही वॉज सैक्ड ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग हैबिट, दिस लेड हिम टू बेग। और इसी के आंसर आगे लिखेंगे, लश्कॉफ गेव द रीजन फॉर हिज टेलिंग लाइज दैट ही फॉर्मली sang in a Russian choir but was fired from his job for being an alcoholic, so he had to tell lies. He could not get along without lying as no one would give him anything if he told the truth. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही हैप्पी प्रिंस का ये लिख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड सो बाय हिज courtiers because he remained always happy. The happy prince was called so by his courtiers because he remained always happy. When the prince was alive, he did not know anything like tears because he lived in a royal palace where there was no entry of sorrow. But when he died, he was changed into a statue who saw the statue of the city and cried. It was the time when tears flowed from his eyes. He could not see the ugliness and misery of the city around him. इसके बाद हम नेक्स्ट पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद आंसर रीड करेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट कलाम स्कूल डेज व्हेन अ न्यू टीचर शिफ्टेड हिम टू द बैक रो। What followed this incident? Teachers can either make or break their students' life. Cite incidents from my childhood to prove the truth of this statement. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, हम इसको रीड कर लेते हैं आंसर्स को।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. अब्दुल कलाम wore a cap and his friend Ramanatha Shastri wore a sacred thread. They used to sit in the first row in the class. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy, so she asked Abdul to sit on the back bench. The new teacher break their students' lives. She create communal differences among students. तो ये ख़त्म हो गया. अब इसका सेकंड पार्ट का पहले क्वेश्चन रीड करेंगे. अब इसका सेकंड ऑप्शन वाला पार्ट हम रीड करते हैं. हेट्रेड, जेलसी एंड मिसडीड्स आर द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स ऑफ आवर अर्थ. डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम नो मैन आर फॉरेन. हाउ डज द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम. तो चलिए ये 6 इसमें जो है वो मार्क्स का क्वेश्चन है. इसको हम इसके आंसर्स भी हम देख लेते हैं. चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे हम. द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, अ यूनियन, अ सिंगुलर एंटिटी. इट मे बी पॉसिबल दैट द पीपल ऑन द अर्थ मे बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, कास्ट, creeds. They may speak different languages and vernaculars. They may be follower of different religions, but still they are equal. इसके आगे each one whosoever lives on the earth is our brother, so we should follow the path of fraternity. If we are in the close vicinity of one another, we can enjoy peace and share the joys. Nature has showered upon us, but if we do not follow this path and start a war against our own brothers, we are polluting our own beautiful earth. Our hatred, jealousy, and misdeeds have no limit, and they are a serious threat to humanity. अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. Answer any one of the following in about 100 to 120 words. First है Johnsy could not get better despite the efforts made by the doctor and her friends Sue. Assistance and help. Discuss and elaborate the negative feeling that keep one ailing, and also discuss the values which remove such feelings and infuse a person with a desire to live. तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 9 का ही फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है Johnsy could not get better despite all efforts. The reason for it was that she had associated herself with the negative feelings. इसके आगे she looked at an ivy creeper outside on the wall shedding its leaves. She started counting backwards from 12. Sue asked what it was all about. Johnsy said that she would die with the falling of the last leaf. Sue told her that was all nonsense, but it had no effect on Johnsy. She had established a bond of her life with the ivy leaves. She felt she would die when the last leaf fell from the creeper. It was raining heavily and wind was blowing. It seemed that last leaf would fall any minute. Behrman painted the ivy leaf, putting his own life in danger. Next day, when Johnsy saw the leaf, she felt elevated. Johnsy said that she would die with the falling of the last leaf. अच्छा ये वाला ना रिपीट हो गया है यहाँ से. सो शी फेल्ट एलिवेटेड. आगे she was so sorry for being depressing and glooming, but Behrman had caught pneumonia and died 2 days later. But his masterpiece had saved the life of Johnsy. The sacrifice of Behrman shows that love, resolution of one's own conflicts, selfless service and realization inspire one to live. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस पेपर का और वाला चॉइस वाला. सेकंड, माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई. व्हाई डज द ऑथर से सो? हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर? व्हाई डज ही से दैट ही इज आल्सो बैक? एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम. तो चलिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट पेज है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका. तो चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है ये. द ऑथर वॉज अ टीनेज हाई स्कूल बॉय. ही चेंज हिज स्कूल एंड ही लॉस्ट ऑल दिस ओल्ड फ्रेंड्स. ही वॉज एक्सपीरियंसिंग लोनलीनेस व्हेन ऑथर and his mother lost their house to fire. He lost all his stuffs and his dear cat. He was feeling anxious and loneliness until all his schoolmates
came forward to help him during that fire time. Later, he learned to look the life in a positive view and went back to his usual life when something exciting happened. तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेटा जो हमने यहाँ पर इस तरीके से करे. यहाँ पे इसके आगे का भी आंसर यहाँ से भी आप देख करके लिख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो. द ऑथर लूजेज एवरीथिंग इन द फायर. ही कांट फाइंड हिज कैट ऑल्सो. ही लूजेज ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ. ही वॉन्ट्स टू डाई बट हिज schoolmates come to his help. They get him everything that he needs. The help in rebuilding his house. A kind woman bring back his cat also. Thus the author regains his interest in life. That is why he says my cat was back and so was I. तो बेटा ये था आपका सैम्पल पेपर. लास्ट जो था इसका सेक्शन डी इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए. एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम. वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.